Hello, Namaste, and welcome to Vision Institute. I welcome you all to our YouTube channel. I am Pallobi, your friend and guide, and I guide you all with top 10 vocabulary words based on the Hindu editorials every day. So today I'm again here with top 10 vocabulary words based on the Hindu editorials, and welcome to our session of daily dose of vocabulary based on the Hindu editorials. So, like every day, we'll start our session with our motivational line. So, motivation is very important these days. When these days we are a little bit down in our luck, as well as we are a little bit down in energy as well. So, as you all know that classes are a little bit starting, and there is a notification of trains also starting, local trains starting. So let us see what the result becomes. The local train is starting. We don't know what will be the result of the local trains that are starting, that will run from today only. So let us see what happens, and let us see after this running of the local trains, there is an increase in number of there is an increase in number of the coronavirus patients or not. That depends on the luck, and totally that everything depends on time. So like every day, we'll start our session with a motivational line. Let us see what is our motivational line for today. For today, our motivational line is: tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. So this is a best and the most important motivational line for a student, whoever is studying and whoever is related to any studies. So for them, this line is very much essential. So tell me and I forget. If you tell me something, if any teacher tells me something, if I tell you something, then that will be in your mind for a limited period of time. It is not going to stay in your mind for long. It is your mind, it is human brain, it will go off. Okay. But teach me and I remember. So if I teach you something, if I make understand you something, if I give you examples, if I relate that thing with any other thing, if I relate it with some experience of my life or any life related things, then if I teach you something, you will remember that. But even then, your remembering power is for a little period of time. You will again forget. But if I involve you in something, if I get involved in something, involvement means what? That if I am, just suppose, if I want to prepare for any examination, just say government examination, I want to prepare. So I will try to be surrounded by studies, surrounded by an environment where people study, where my friends study regularly, in a very disciplined manner. So if I am surrounded by people who study, who have a motivation for studies, who want to crack the examination, then in that case, if I involve myself in that kind of an environment, if I get involved with these kind of people, then that will be very much essential for my preparation also, and I will get motivated by them. There will be a competitive nature growing on inside me, right? So that is what is the meaning of involvement. Why involvement is so much necessary for you to learn, for you to get a competitive attitude inside you, for you to prepare for your competitive examination. So involvement is very much required. If you want to crack any government examination, then just learning, or just your teacher is teaching you, just you are mugging up things, that will not do. Okay, that is not going to do. So involvement in your studies, or involvement in your nature, in your surroundings, in your the way where you live, or the people whom you meet, is very much essential. That plays a vital role.
See, if you have friends who have no connection with studies, or who are related in a business, or who are doing their father's business, or maybe they are involved in any private sector job, okay, and they have no connection with studies, okay, they are not preparing for any government examination, they have no connection with studies, then your friendship with them is not going to help you. Maybe it is going to help you in some other ways, right? That is your personal matter, but it is not going to help you in your studies. It is not going to help you motivate for your government examination, right? If you want to crack your government examination, your surroundings has to be very important. Your involvement is very essential, is a very vital thing, right? So let us start our session with this motivational line for today. A very good morning to you all, and I'll start my session with our first vocabulary word. Let us see what is our first vocabulary word for today. Our first vocabulary word for today is torment. Okay, torment is a noun. Torment एक noun है जिसका meaning होता है यातना. So what is the meaning of torment, or what is the meaning of yatna? In English you can say severe physical or mental suffering. So maybe you are suffering physically as well as mentally. That is called torment. So severe physical and mental suffering is called torment. Okay. Synonyms इसके हो सकते हैं suffering, torture, pain, anguish. Antonyms हो सकते हैं pleasure, joy. These can be the opposite words. How to use it in a sentence? As the test date neared, haunting thoughts of failing her exam began to torment her mind. तो क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या है? जैसे ही टेस्ट का डेट पास आ रहा था, टेस्ट डेट नियर्ड मतलब पास आ रहा था, haunting thoughts of failing her exam, उसको ऐसे थॉट्स आ रहे थे, ऐसे चिंता उसके दिमाग में आ रहे थे जो उसको हॉन्ट कर रहे थे, मतलब उसको डरा रहे थे रात को. उसको क्या थॉट्स आ रहे थे कि वो एग्ज़ाम में फेल हो जाएगी. दैट बिगैन टू टॉर्मेंट हर माइंड, और इस वजह से उसके ब्रेन में और या फिर उसके दिमाग में एक जैसे कि एक सफ़रिंग हो रहा हो. वो बहुत सफ़र कर रही थी, वो बहुत पेन में थी, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट सामने जैसे ही आता जा रहा था, उसको ऐसे सपने आ रहे थे, ऐसे बुरे चीज़ें वो सोच रही थी, जिस वजह से उसको बहुत टॉर्चर फील हो रहा था अपने ब्रेन में, राइट? दैट इज़ कॉल्ड टॉर्मेंट. What is our next vocab? Our next word is copious. copious, copious. Copious is an adjective जिसका meaning होता है प्रचुर, मतलब बहुत मात्रा में. You can say in abundance. Okay, abundant in supply or quantity. So basically anything that is in abundance is called copious. Synonyms can be abundant, plentiful, ample, profuse. These can be the similar words. Antonyms can be sparse. Okay, so how to use it in a sentence? How to use copious in a sentence? He was able to support his argument with copious reasoning. तो उसने अपने आर्ग्यूमेंट को कोपियस रीजनिंग के साथ सपोर्ट किया. कोपियस रीजनिंग मतलब विथ अ लॉट ऑफ रीजनिंग, मतलब उसने बस ऐसे ही अपने बात को बोल नहीं दिया. उसको सपोर्ट करने के लिए उसने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, उसने बहुत सारे रीजनिंग दिए जो कि बहुत मात्रा में था. दैट मीन्स ही हैड अ लॉट ऑफ रीजनिंग, ही हैड अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स टू गिव टू इन सपोर्ट ऑफ हिज आंसर. लाइक दैट इज कोपियस. Okay, so we have our first idiomatic expression for today. What is our first idiomatic expression for today? Our first idiomatic expression is caught between two stools. So you are caught between two stools. Stools means chair जिसमें हम लोग बैठते हैं. That is called stool. Okay, so आप दो स्टूल के बीच में फंस गए हो. इसका मीनिंग क्या होता है? The meaning of caught between two stools is when someone finds it difficult to choose between two alternatives. जब ऐसा सिचुएशन तैयार होता है, क्रिएट होता है कि दो ऑल्टरनेटिव्स मतलब दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस के बीच में चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट महसूस हो रहा है हम लोगों को, कि दो ऑप्शंस के बीच में हम चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, दो ऑल्टरनेटिव्स के बीच में चूज़ करना डिफ़िकल्ट हो रहा है. दैट इज़ कॉल्ड कॉट बिटवीन टू स्टूल्स,
राइट इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें? ही हैड कमिटेड टू बोथ एंड नाउ ही इज कॉट बिटवीन टू स्टूल्स। तो उसने दोनों की तरफ ही कमिटमेंट दे दिया, कमिटमेंट कर दिया, मतलब मे बी उसने कमिट किया है दोनों को ही, या तो कुछ खरीदना है उसको तो उसने कमिट किया है कि मैं हाँ दो तुमसे भी खरीदूंगी, तुमसे भी खरीदूंगा, राइट। सो दिस इज कमिटमेंट। सो इफ़ यू आर कमिटेड टू बोथ, तो इस वजह से आपको क्या हो रहा है, अब आप डायलेमा में फंस गए हो, मतलब आपको दो तरफा एक ऑल्टरनेटिव आपको मिल गया, अब तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किसको चुने, राइट। दैट इज कॉल्ड caught between two stools. Our next vocab is dysfunction. So what is the meaning of dysfunction? Dysfunction एक noun है जिसका meaning होता है दुष्क्रिय, okay? दुष्क्रिय. In English you can say disruption of normal social relations. So if something is having a dysfunction, that means ठीक ठाक ये function नहीं कर रहा है, ठीक ठाक work नहीं कर रहा है, that is called dysfunction, okay? Synonyms can be impaired, antonyms can be unimpaired or fit. So this can be the antonyms. How to use it in a sentence? Kidney dysfunction required the patient to have dialysis 3 times a week. तो इस पेशेंट को किडनी डिसफंक्शन था, मतलब किडनी का एक प्रॉब्लम था इस पेशेंट को, मतलब किडनी वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. So that is why what happened, the patient required dialysis 3 times a week, right? मतलब हफ्ते में 3 बार. That is dysfunction. What is our next word? Our next word is stringent. Stringent is an adjective. Stringent एक adjective है जिसका meaning होता है हिंदी में कसा हुआ, या फिर you can say in English not allowing for any exceptions or loosening of standards. So stringent means stringent rules, that means some strict rules that you cannot break, that is not flexible at all, okay? That means it's not a loose rule, it's there is no exceptions to these rules, that is called stringent. Synonyms इसके हो सकते हैं inflexible, rigid, rigorous, these can be the synonyms. Antonyms can be flexible, lax, loose, relaxed, slack, these can be the opposite words. How to use it in a sentence? When Martha was overweight, her doctor put her on stringent diet that left her feeling hungry all the time. तो जब Martha is a girl, maybe a woman. So जब मार्था ओवरवेट थी, मतलब जब उसका वेट बहुत ज़्यादा था, ओवरवेट थी वो, तब उसके डॉक्टर ने उसको क्या किया था, उसको एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट दिया था, स्ट्रिंजेंट डाइट दिया था फॉलो करने के लिए, जिसको फॉलो करने से वो हमेशा उसको भूख लगा रहता था, राइट? दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंजेंट. Next vocab is xenophobic. So what is the meaning of xenophobic and what is its parts of speech? Xenophobic is an adjective जिसका meaning आप कह सकते हैं कि विदेशी दवेश, okay? Or you can say being afraid or strongly disliking outsiders or unknown people. So you can say that somebody is afraid or somebody doesn't like outsiders or unknown people. Outsiders means people coming from different countries outside our own country. That is also called a phobia, right? So some people have a phobia, they don't like people who are coming from other countries or whom they don't know. So that is called xenophobia, fear of people, unknown people. Synonyms can be racist, racialist, ethnocentric, and इसके opposites हो सकते हैं bountiful, permissive, thoughtful, lenient. These can be the opposite words. Sentence में इसको कैसे use करें? Many xenophobic people are against the building of the border wall because of their hatred towards immigrants. तो बहुत से ऐसे xenophobic लोग हैं आर अगेंस्ट द बिल्डिंग ऑफ द बॉर्डर वॉल. तो ऐसे बहुत से xenophobic लोग हैं जो बॉर्डर वॉल जो बिल्ड हो रहा था, मतलब तैयार हो रहा था, उसके अगेंस्ट है, क्योंकि उनको इमिग्रेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं, वो लोग इमिग्रेंट्स से बहुत नफरत करते हैं, राइट? इमिग्रेंट्स मीन्स सम पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, राइट? दैट इज कॉल्ड xenophobic. So our next vocab is disorientation. Disorientation is a noun. Disorientation एक noun है जिसका meaning होता है भटकाव, या फिर in English you can say the condition of having lost one's sense of direction. तो ऐसा एक condition जहाँ पे कोई
इंसान अपना सेंस ऑफ डायरेक्शन लूज कर चुका है, राइट? सो शी और ही इज़ नॉट हैविंग अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। सिनोनिम्स के हो सकते हैं एडल, बैफल। एंटोनिम्स हो सकते हैं रीअश्योर, सेटिस्फाई। These can be the synonyms and antonyms. How to use it in a sentence? Have you seen him experience any dizziness or disorientation? Basically, disorientation means चलने में problem होना, or you can say जाना था right hand side, or but the person is going on the left, right? So some confusion relating to the direction. दैट इज़ कॉल्ड डिसोरिएंटेशन। तो क्या उसके बिहेवियर में एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? हैव यू सीन हिम एक्सपीरियंस एनी डिजीनेस? क्या तुमने देखा है कि उसको कोई डिजीनेस हो रहा है या डिसोरिएंटेशन हो रहा है या नहीं? Dizziness means you can say that anybody who cannot concentrate in his or her work, or always feeling sleepy, or you can say there is a loss of balance in that person, that is called dizziness. Okay, and disorientation means a problem related to direction. So we have our next idiomatic expression. What is this? Cross that bridge when you come to it. Cross that bridge when you come to it. So what is the meaning of this idiom or this idiomatic expression? Let us see the meaning. Deal with a problem if it becomes necessary. तो इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में नेसेसरी हो जाए तब उसको डील करना पड़ेगा ही। अगर मे बी आप कोर्ट जाना पसंद नहीं करते हो, राइट, लेकिन आप अगर कोई केस में फंस जाए या आपका नाम आ जाए कोई केस में, तो आपको कोर्ट भी जाना पड़ेगा, अच्छे लॉयर के पास भी जाना पड़ेगा, और वो केस लड़ना भी पड़ेगा, चाहे आप कोर्ट जाना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। सो दैट मीन्स यू हैव टू डील विद अ प्रॉब्लम इफ़ इट बिकम्स नेसेसरी फॉर यू। सो अगर आपके लिए वो प्रॉब्लम नेसेसरी हो जाता है, मतलब डील करना ही पड़ेगा, तो आपको डील करना ही पड़ेगा। दैट इज इन दिस काइंड ऑफ पोजिशन वी यूज दिस फ्रेज, इन दिस idiomatic expression, cross that bridge when you come to it, right? So how to use it in a sentence? Let's see. तो देखते हैं यहाँ पे क्या यहाँ पे एक पैरा दिया हुआ है। He says, I think I need to hire a lawyer. तो ही बोल रहा है कि मुझे लगता है कि मुझे एक लॉयर की ज़रूरत है, और शी क्या बोल रही है? क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। दैट मीन्स अगर ये नेसेसरी है तो तुमको ये करना ही पड़ेगा, तुमको एडवोकेट हायर करना ही पड़ेगा, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। Let us see what is the next vocabulary word. Our next word is priggish. Priggish is an adjective जिसका meaning होता है परोपदेशक, or you can say in English self-righteously moralistic and superior. So self-righteously moralistic मतलब अपना moral बहुत high हो, या फिर he or she is very much superior. So that is called priggish. Synonyms इसके हो सकते हैं smug, या फिर हो सकते हैं sanctimonious, moralistic, या फिर हो सकता है prudish. These can be the synonyms. How to use it in a sentence? And okay, so let us see the antonyms first. Opposite words. Opposite words can be broad-minded, permissive, overstrong. These can be the opposite words. Sentence में कैसे use करें? After working for a priggish boss who was never satisfied with my work, I decided to work somewhere else who was not so demanding. तो मैंने अपने प्रिगिश बॉस के पास बहुत सारा काम किया, मतलब बहुत दिन काम किया, लेकिन ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड विथ माई वर्क। उसको कभी मेरे काम से सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कहीं और काम करूँगी। हु वॉज नॉट सो डिमांडिंग, जहाँ का बॉस इतना ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होगा, इतना ज़्यादा सर पे चढ़ के बैठेगा नहीं, और इतना ज़्यादा वो एम्प्लॉयज़ के पीछे पड़ा भी नहीं रहता है, राइट? दैट इज़ कॉल्ड प्रिगिश. सो व्हाट इज़ प्रिगिश? Priggish boss, that means somebody who has a very higher level of morals and who has set the superiority level much higher. इसीलिए employees से छोटा छोटा गलती भी हो जाता है तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है. That is called priggish kind of a people. Alright, so our next word is banter. Banter is a noun जिसका meaning होता है मजाक. In English you can say the playful and friendly exchange of teasing remarks. तो किसी को टीज करना मीन्स किसी को किसी चीज़ के लिए व्यंग करके बोलना,
मजाक करना बेसिकली इन अ प्लेफुल मैनर, मतलब ऐसे जोक करना, दैट इज कॉल्ड बैंटर. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं वाइस क्रैक्स, क्रॉस टॉक, वर्ड प्ले, रिबिंग, दीज कैन बी द सिमिलर वर्ड्स. ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं फ्लैटरी, प्रेज, वर्क, दीज कैन बी द ऑपोजिट वर्ड्स. How to use it in a sentence? The teacher always gives us 2 or 3 minutes to banter with our friends before she starts the daily lesson. तो टीचर क्या करती है? टीचर हमेशा हम लोगों को 2 से 3 मिनट देती है बैंटर करने के लिए, मतलब 2 से 3 मिनट देती है थोड़ा गप्पे मारने के लिए, थोड़ा अड्डा मारने के लिए विथ आवर फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स के साथ, बिफोर शी स्टार्ट्स द डेली लेसन. तो डेली लेसन स्टार्ट करने से पहले टीचर हमें 2 से 3 मिनट देती है थोड़ा बात करने के लिए. Let us see our next word. Our next word is bout. B-O-U-T, bout. Bout is a noun जिसका meaning हिंदी में लिखा हुआ है काल. You can say the meaning of bout is a short period of intense activity of a specified kind. You can say usually painful or unpleasant. तो bout जो है ये word generally unpleasant कोई चीज़ के लिए यूज़ होता है, painful चीज़ के लिए यूज़ होता है. That is called bout. All right. Synonyms इसके हो सकते हैं spell, period, time, stretch, stint. These can be the synonyms, similar words. Opposite words इसके हो सकते हैं stagnation. Sentence में कैसे यूज़ करें? After missing 4 days of school due to a bout of flu, Emily struggled to make up her missing work. तो फ्लू हो जाने के वजह से, ड्यू टू अ बाउट ऑफ फ्लू, दैट मीन्स फ्लू उनको था कुछ दिनों के लिए. इट वॉज अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस, सो दैट इज़ अ बाउट ऑफ फ्लू. दैट मीन्स शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फ्लू फॉर अ फ्यू डेज एंड दैट वॉज वेरी पेनफुल. दैट इज़ बाउट ऑफ फ्लू. तो 4 दिन से वो स्कूल नहीं गई थी और उनको अबाउट ऑफ फ्लू, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अबाउट ऑफ फ्लू, एंड दैट इज़ वाई एमिली स्ट्रगल टू मेक अप हर मिसिंग वर्क. तो उसका जो मिसिंग वर्क हो गया था 4 दिन का, उसको मेकअप करने के लिए वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी. ओके, सो वी हैव आवर लास्ट vocabulary फॉर टुडे. आवर लास्ट vocabulary इज न्यूरोसिस. न्यूरोसिस इज अ नाउन जिसका मीनिंग होता है विक्षिप्त, या फिर यू कैन से मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स ओनली पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी. तो न्यूरोसिस एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे ये एक मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर है विच इज़ रिलेटेड टू द ब्रेन, विच इज़ रिलेटेड टू द नर्व्स. ओके, जिसके वजह से किसी भी इंसान का कोई पर्सनालिटी का कोई भी पार्ट को हार्म करता है. द पर्सन डजंट गेट हार्म्ड फुल्ली. ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एबरेशन, डिमेंशिया, हेलुसिनोसिस. एंटोनिम्स हो सकते हैं लूसिडिटी, रैशनलिटी, रीजनेबिलिटी. दीज कैन बी द opposite words. How to use it in a sentence? She got a neurosis about chemicals and imagined them everywhere doing her harm. तो इनको क्या न्यूरोसिस था? न्यूरोसिस इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़ जहाँ पे हम हेलुसिनेट भी करते हैं, राइट? मतलब ऐसा है नहीं, लेकिन सोच रहे हैं कि ऐसा है. ओके, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोसिस. तो न्यूरोसिस के वजह से उसको क्या हो रहा था, उसको हमेशा लगता था कि ये जो केमिकल्स है, ये वो इमेजिन करती थी कि ये हमेशा सारे जगह पर इसको हार्म पहुंचा रहा है, इसको क्षति पहुंचा रहा है, right? So it is harming her from inside, these chemicals. So that was not right, that is not correct. So that is called neurosis, right? So we have our last idiomatic expression for today. What is our last idiomatic expression for today? It is cut corners. So what is the meaning of cut corners? It means to take shortcuts when something is done badly to save money. तो shortcut लेना जब कोई चीज़ किसी पैसा बचाने के लिए किया जा रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड कट कॉर्नर्स. मतलब बहुत कम पैसे में काम चलाया जा रहा हो, राइट? दैट इज़ कॉल्ड कट कॉर्नर्स. What is the meaning? We have learned the meaning. So how to use it in a sentence? They always put quality first. They won't cut corners just to save money. तो ये they maybe it is related to, it is we are talking about any businessman or any office. So they always put quality first. ये लोग हमेशा first preference देते हैं quality को. They won't cut corners just to save money. तो ये लोग कभी शॉर्टकट नहीं लेते हैं, ये लोग कभी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं पैसा बचाने के लिए, राइट? सो दे वोंट कट कॉर्नर्स. ये लोग पैसा बचाने के लिए कभी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. सो दैट इज़ कॉल्ड कट कॉर्नर्स.
So guys, this was all about your top 10 vocabulary words based on the Hindi editorials for today. I hope you like the session. If you like the session, do click on the like icon and comment how you are liking our videos, or whatever you like. Please do write to me in the comment section. Share it with your friends and relatives. If you think these videos are very essential for them also, share it with them so that it becomes useful for them also. It helps them also, right? And yes, if you are new to our channel, subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon so that you get all the recent updates and whenever a new video is posted. So see you next day. Till then, take care. Goodbye.